Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Welcome to another edition of Market Mantra, in which we give you a complete update on the economic news of the day. And today being a Saturday, we'll also be taking calls from your listeners on any queries that you may have on business, economic and stock market matters. But do remember that we don't address stock or company-specific queries. You can call us on our direct numbers 2331-4444 and 2342-1050. Our numbers once again are 2331-4444 and 234-1050. Please dial 011 as the STD code before these numbers. I'm Arjun Chaudhary, and with me is my co-anchor in Hindi, Ambreesh Saxena. नमस्कार। आर्थिक खबरों के कार्यक्रम मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है। रोज की तरह आज भी हम देश और दुनिया से आर्थिक, व्यापारिक और शेयर बाजार के ताजा समाचार आप तक लाएंगे और उन पर चर्चा करेंगे। श्रोताओं, आज शनिवार है और हमेशा की तरह आज हम आपके प्रश्नों को भी इस कार्यक्रम में शामिल करेंगे। आप हमसे स्टॉक या कंपनी स्पेसिफिक क्वेरीज को हम नहीं ले पाएंगे, लेकिन आपके जो भी प्रश्न होंगे वो आप हमें इन नंबरों पर फोन करके पूछ सकते हैं 23314444 और 23421050। प्रमुख खबरों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बाजार विश्लेषक डॉक्टर यामिनी अग्रवाल। यामिनी जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद। और पहले हेडलाइंस लेके मौजूद हैं अर्जुन चौधरी। Key domestic stock indices log gains of 0.5% in the week ended yesterday. Sensex finishes above the 60,000 mark. Nifty settles near 18,000 level. And the US share markets trade mixed amid concerns about aggressive Fed Reserve action. घरेलू शेयर बाजारों में कल समाप्त हुए सप्ताह में 0.5% की बढ़त दर्ज की गई। सेंसेक्स 60,000 के स्तर के ऊपर चला गया, जबकि निफ्टी 18,000 के आसपास बना रहा। और अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरें बढ़ाने की आशंका के बीच शेयर बाजारों ने मिला जुला प्रदर्शन किया। सबसे पहले शेयर बाजारों का हाल जान लेते हैं। घरेलू शेयर बाजारों में कल समाप्त हुए सप्ताह में 0.5% की बढ़त दर्ज की गई। बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स 60,000 के स्तर के ऊपर चला गया, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 18,000 के आसपास बना रहा। दुनिया के शेयर बाजारों में मिले जुले रुख के बीच दोनों ही शेयर बाजारों में 5 कारोबारी सत्रों में से 3 में बढ़ोतरी दिखाई दी। सप्ताह के दौरान सेंसेक्स 320 अंक यानी 0.53% की बढ़त के साथ 60,003 अंकों पर जा पहुंचा। निफ्टी 88 अंक यानी 0.49% की बढ़त के साथ 17,944 अंकों पर पहुंच गया। बंबई शेयर बाजार के व्यापक बाजार में बीएसई मिड कैप और बीएसई स्मॉल कैप सूचकांकों में सप्ताह के दौरान गिरावट दर्ज की गई। बीएसई मिड कैप सूचकांक 0.82% और स्मॉल कैप सूचकांक 0.77% गिरा। यानी जो ऐसा कि शेयर बाजारों का इस सप्ताह का हाल हम देखें, इस बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। अभी हमारे साथ 2 श्रोता जुड़ चुके हैं, दिल्ली से संतोष और मुंबई से रवि। सबसे पहले संतोष का सवाल लेते हैं। संतोष, नमस्कार, बताइए क्या पूछना चाहते हैं? जी नमस्कार। हेलो जी सवाल नमस्कार जी, सवाल पूछिए। जी 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 मैं ये जानना चाहता हूँ, मतलब मेरा निजी ये सवाल है। हम अक्सर न्यूज पे आपके प्रोग्राम में सुना करते हैं शेयर मार्केट में जो घटता है बढ़ता है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में घटता है बढ़ता है, अपने राष्ट्रीय बाजार में। तो सर हम ये जानना चाहेंगे ये इसका कारण क्या होता है? कभी एकदम से घटेगा फिर बढ़ेगा, तो ये मुख्य कारण क्या होता है? जी देखिए, जो स्टॉक मार्केट है उसमें जो बढ़त और घटत होती है वो इस मूल पे होती है कि क्या मांग है और उसकी क्या सप्लाई है स्टॉक की।
कोई भी स्टॉक जो डिमांड किया जाता है या उसकी सप्लाई होती है वो ओवरऑल उसकी प्राइस डिटरमिन करती है। उसके लिए जरूरी है ये देखना कि इकोनॉमी के क्या फैक्टर्स हैं, जैसे मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं, आपके जीडीपी ग्रोथ है, इन्फ्लेशन है, एम्प्लॉयमेंट है, आईआईपी इंडेक्स है, ये कैसा है और इकोनॉमी कैसी चल रही है। ये भी जरूरी है जानना कि वो इंडस्ट्री कैसे कर रही है, और साथ ही जो पर्टिकुलर स्टॉक है जिसकी आप बात कर रहे हैं उस कंपनी में क्या मुनाफा रहा है और उसकी कोई अनाउंसमेंट आई है या नहीं आई जो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। ये सभी निर्णय करते हैं कि किस तरीके से वो स्टॉक ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। So for the benefit of our listeners, छोटे निवेशक हैं, clearly a long-term horizon has to be there before they invest, या म्यूचुअल फंड का भी वो रूट अपना सकते हैं। जी, छोटे निवेशक जो स्टॉक मार्केट्स को ज्यादा नहीं समझते उनके लिए बेहतर होगा कि एक प्रोफेशनली मैनेज्ड फंड के अंदर इन्वेस्ट करें, जिसके लिए म्यूचुअल फंड्स के बड़े सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। उसमें एसआईपी की भी ऑप्शन होता है, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जो छोटी इकाइयों में आप निवेश कर सकते हैं। Next caller is Ravi from Mumbai. Ravi, a warm welcome to you on Market Mantra. Please ask a question to your expert, Shri Yamini Agarwal. मार्केट मंत्रा टीम को और यामिनी मैडम को और महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। मुझे मैडम जानना है, जैसे कि अभी ये मार्केट ऑल टाइम हाई के करीब चल रहा है, तो आईटी, इंफ्रा और फाइनेंस, ये 3 सेक्टर में इन्वेस्टमेंट के लिए, कि जैसे कि अभी गवर्नमेंट का जीएसटी कलेक्शन भी अच्छा खासा बढ़ा हुआ है, ऑल टाइम हाई है, तो इंफ्रा में इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट का ज्यादा रुझान रहेगा, उसमें करना सही है। और फाइनेंस में जैसे कि इंटरेस्ट हाई अगर बढ़ता है तो वो केस में बैंक की इनकम बढ़ती है कि कैसे, वो एक समझना था मुझे। जी देखिए, आपका पहला सवाल है कौन से सेक्टर्स अच्छे रहेंगे। तो अगर आप देखें तो आने वाले सप्ताह में जो सेक्टर्स माने जा रहे हैं अच्छा परफॉर्म करेंगे उसमें है एफएमसीजी, आईटी, फार्मा और बैंकिंग। ये कुछ सेक्टर्स माना जा रहा है कि अच्छी परफॉर्मेंस दे सकते हैं। जहां तक किसी भी निवेश का सवाल है उसके लिए जरूरी है कि आप अपना इन्वेस्टमेंट होराइजन डिफाइन करें और आप ये भी देखें कि कौन से स्टॉक्स अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि स्टॉक मार्केट में अभी स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन रहेगा जो स्टॉक स्पेसिफिकली आपको अच्छा मुनाफा दे सकते हैं। अगर आपका लॉन्गर होराइजन है और अच्छा जेस्टेशन पीरियड है तो उसके अंदर आप इंफ्रास्ट्रक्चर में भी निवेश कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश करी हैं जो आगे चल करके मुनाफा कमा सकती हैं। जी, और इस बीच बेंगलुरु से हमारे श्रोता एनआर प्रसाद जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रसाद जी नमस्कार, बताइए क्या पूछना चाहते हैं। I'm afraid we have lost contact with the caller there. Just coming back to the question put up by Ravi from Mumbai regarding banking sector. Yamini, the repo rate is at 6.5%. Do you see the net interest income of banks, especially PSUs, go up now that the NPA has come down substantially and the profitability in the third quarter has certainly improved? What would you advise the small investor for a medium to long horizon when it comes to banking index? Well, overall the banking sector has been doing well, as has been indicated by the profitabilities that has been indicated by SBI or by the other public sector banks also. There has been a lot of changes in the overall structure in terms of dealing with the NPA, especially with the insolvency and bankruptcy code coming into place. Also, because the interest rates have risen, that has also affected the interest incomes of the banks, which ultimately do result into the profits of the banks. So there would be a certain amount of a profitability that can be seen in the banking sector, especially for that. As far as the NPA management is concerned, especially for the PSUs, we do see that a lot of reform processes have been adopted right from the board level management to the executive level in terms of recognizing the NPAs and dealing with that. That has also helped in bringing the NPAs down. The gross NPA positions in the scheduled banks today is at a 7-year low of about 5%, and the net NPA position is at about 1.3%. So that has improved. Even the large borrower account, out of which the standard accounts, standard assets as we may call them, moved from somewhere around 86% to 90% and above. So that has also shown an improvement overall in the banking sector.
और दिल्ली से हमारे श्रोता सतीश चंद्र जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सतीश जी नमस्कार, बताइए क्या पूछना चाहते हैं। सर टू यू ऑल, मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि इन्वेस्टर एजुकेशन फंड में ये जो प्रोसीजर है शेयर्स वापस रिक्लेम करने का, ये बहुत कम्बरसम है और इसका जो पोर्टल है वो हमेशा ही बिजी रहता है। और क्या इसमें कोई टाइम लिमिट है कि हम इतने टाइम तक हम शेयर्स अपने रिक्लेम कर सकते हैं? दूसरा क्वेश्चन कि क्या इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोफेशनल बनना ठीक है और नहीं है? थैंक यू जी। देखिए, इन्वेस्टर एजुकेशन फंड के द्वारा अपने शेयर्स क्लेम करना और डिविडेंड्स क्लेम करने का कोई स्पेसिफाइड पीरियड नहीं होता, पर यूजुअली माना जाता है कि 7 साल के अंदर अंदर आपको क्लेम कर लेना चाहिए। इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड के अंदर जो आप इंसॉल्वेंसी जो है प्रोफेशनल बनना चाहते हैं, उसमें काफी हद तक एक बहुत अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है, खास तौर पे क्योंकि काफी सारे कंपनीज को एनसीएलटी को रेफर किया जाता है, तो उसमें इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स का काफी रोल रहता है। Next caller is Kashinath from Chennai. Kashinath, a warm welcome to you in the program. Please ask your question to our expert, Dr. Yamini Agarwal. Kashinath, do we have you online? Yes, sir. Good evening, Market Mantra team, sir. Good evening, Kashi. Ask your question. सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे कि मेरा पिताजी ने 50 लाख एफडी रखे थे, तो पिताजी का देहांत हो गया, तो प्राइमरी वो माताजी को नॉमिनी रखे थे, तो माताजी अभी प्राइमरी होल्डर हो गए हैं, तो हम 500 भाई हैं, तो वो नॉमिनी बैंक वाले में बोलते हैं 2-3 नॉमिनी से हम ज्यादा नहीं रखेंगे, पोस्टल वाले भी ऐसे बोलते हैं, तो जो 2-3 भाई भी बच जाएंगे, तो उनको तो सपोज माताजी का देहांत तो हो जाएगा, तो हम लोग को 2-3 जो बच जाएंगे उनको तो नहीं मिलेगा। इसके बारे में थोड़ा जानकारी दीजिए। और वो 50 लाख को कैसे इन्वेस्ट करेंगे, इसके बारे में सेकंड क्वेश्चन है। अभी पैसा का जरूरत नहीं है, पेंशन आ रहा है माताजी का, इसके बारे में थोड़ा जानकारी दीजिएगा। धन्यवाद जी। जी देखिए, नॉमिनेशन बैंक्स यूजुअली 1 या 2 एक्सेप्ट करते हैं। अगर आपकी मदर आपको नॉमिनेट करना चाहती हैं अपने अमाउंट के लिए, तो वो एक विल बना सकती हैं और आप उसे रजिस्टर करा सकते हैं। उस विल में वो उनका नामांकन कर सकती हैं, अपनी जो भी प्रॉपर्टी है या जो भी पैसा है उसके लिए, जितने भी आपके भाई बहन हैं उनके लिए। जहां तक निवेश का सवाल है, ये आप पे निर्भर करता है कि आप कहाँ निवेश करना चाहते हैं। बहुत सारी स्कीम्स हैं जिसमें निवेश किया जा सकता है, क्योंकि अगर आपकी मदर सीनियर सिटीजन है तो अब एक सीनियर सिटीजन का बैंक में भी निवेश किया जा सकता है, ऐसे ही पोस्ट ऑफिस में भी निवेश किया जा सकता है। अगर आप मंथली इनकम स्कीम्स चाहते हैं तो आप मंथली इनकम स्कीम्स जो पोस्ट ऑफिस की आती हैं उसमें भी निवेश कर सकते हैं। जो भी आप निवेश करें, अगर आप निवेश स्टॉक मार्केट्स में करना चाहते हैं तो म्यूचुअल फंड्स के द्वारा भी निवेश कर सकते हैं। I think his question was also particular to how they can inherit that amount which is held in an FD. So for that they need a surviving member certificate or a succession certificate from the court. And then once they are deemed as a legal heirs, both as a nominee and as a legal heir, then how to use that amount for investment as well. So he mentioned about the pension benefit that he's getting from his mother, but also from the 50 lakh fixed deposit that would be broken and they would inherit it as well. So they were asking the question also whether they should go in for a mutual fund scheme just to secure that benefit. Mutual fund scheme one can invest in if one is looking at avenues to invest in the stock markets. If one is looking at a fixed return, then or a safe return, then government securities, RBI bonds, post office schemes, senior citizen schemes are much better options for a secure and a risk-free investment. But if you're looking in for a larger investment, going in for bonds as well as stocks, then mutual funds do come in handy. गाजियाबाद से हमारे श्रोता गौरव लाइन पे हैं। गौरव नमस्कार, बताइए क्या पूछना चाहते हैं। Good evening, Market Authority. So my question is about GDP per capita. Madam, my question is about GDP per capita. We are still at 144th position in the world at $2257 in 2021 figure. And now the question is because inflation is making havoc, so that could be the reason for we are not going in terms of dollar for GDP per capita. But if you see graph 5 in 2007, 2010 and 2021, we had a spurt of almost like 18%, 20% rise in GDP per capita.
What could be the reason for these rises, in these years only? Otherwise, in pandemic we were down, and generally our growth of GDP per capita has been hardly 5 to 10% in dollar terms. So what was the reason for phenomenal rise in 21, in 2010, and also in 2007? So, and how do we make sure that it doesn't happen? Just few people earn a lot of money and they become, billionaires, but we have a widespread, distribution of income among Indians so that everybody flourishes. Thank you. So when we talk about gross domestic product per capita, we are talking about the overall gross domestic product overall in the economy, which is divided by the total population. So when you're talking about 2007, 2010, 2021 or 22, you will see that there has been a spate of reforms that have been taking place over the period, and the effect has been observed over there. 2007, 2010 were specific periods when the Indian markets were doing well. Also 2021, the markets had picked up because of the specific reforms with GST and others that had come in. Also, one needs to understand is that there has been a continuous change in terms of the technology that has affected the productivity in the market. There has been a continuous growth that has been pegged in the agriculture sector at about 3% or 3.5%. There has been a growth that has been pegged in the industry sector as well as when you talk about in the services sector, which has been about 9%. So these have been the prime reasons and contributors to it. And when you talk about why GDP should actually be increasing and should be all inclusive, it's important that everybody is given an equal opportunity and they are allowed to become a part and parcel of the economic prosperity, for which a lot of steps the government has taken, one in terms of financial inclusion, the other in the form of digitalization, the third in the form of social security benefits that are either through PM Samman Kisan Yojana or through the Ujjwala Yojana, or through creating the basic infrastructure where everybody can bring about livelihoods. Let's say, for example, smart cities or other things where employment is generated. Also through certain schemes like Manrega where employment is provided. So then the overall growth is reached to the last person also. और बंगलुरु से हमारे श्रोता NR प्रसाद जी लाइन पे मौजूद हैं। प्रसाद जी नमस्कार, बताइए क्या पूछना चाहते हैं? Hi, good evening. This is NR Prasad from Bangalore. Market Mantra really is a wonderful program. Really, it's very beneficial for a lot of investors and traders. There are two questions. The first question is, last 3 weeks, really market crashed because of the Hindenburg. Now, the next episode is George Soros. I don't know how much it going to crash the market. So, whether SEBI or the government of India is going to take actions on the kind of bad statement made by George Soros, people like George Soros. That is the first question. Second question is, in the budget it was announced that while filing the taxes from the next year onwards, that is for the financial year 2023-24 onwards, probably when I filed my returns in from 1/4/2024 onwards, should we declare the assets which you are holding, basically the stocks? These are my two questions. Your first question is with regards to the stock markets. If you've seen the last 6 sessions, the markets have been performing well because of the FII inflows. And also, if you look at the closing of yesterday, there has been a positive trend to the market. There has been an effect of the Hindenburg report on certain specific stocks, which has affected the markets. Also, when you talk about SEBI's action on any of the statements that an investment banker like George Soros gives, the SEBI doesn't have any role to play in that, except for the fact that it can contain volatility if it is observed in specific stocks through circuit filters. Besides that, it doesn't really affect the overall volatility in the market or does not affect the buying and selling of the markets. If there is any insider trading,
or any trading which is detected because of a specific action and which is not in line with the rules and regulation, then SEBI intervenes. Your second question is as far as your filing of tax returns is concerned. For all filing of tax returns, you are supposed to actually declare your stocks sell and buy positions and identify your gains in terms of your short-term gains or long-term gains and pay the taxes accordingly. और ललितपुर से हमारे श्रोता रौनक लाइन पे हैं। रौनक नमस्कार, बताइए क्या पूछना चाहते हैं? सर मेरा प्रश्न ये है कि गोल्ड में सबसे अच्छा एक तरीका है निवेश करना सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में। जी, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जिसमें आप जब निवेश करते हैं तो उसमें आपको एक तो कैपिटल गेन्स टैक्स का बेनिफिट मिलता है, दूसरा आपको 2.4 या 2.5% के आसपास पर एनम इंटरेस्ट रेट मिलता है। साथ ही जब आप निवेश करते हैं तो आप फिजिकल गोल्ड को मेंटेन करने की जगह आप एक बॉन्ड मेंटेन कर रहे हैं जो आपको ये एक इंटरेस्ट रेट दे रहा है, और जब आप इसको फाइनली मैच्योर करेंगे तो जो गोल्ड की प्राइस होगी उस समय पर वो आपको मिलेगी एज रिटर्न, तो उसके ऊपर जो कैपिटल गेन होगा उसके ऊपर टैक्स नहीं होगा। तो ये एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जो नेगोशिएबल भी है, और साथ ही साथ आपको चिंता करने की जरूरत नहीं होती कि आपको इसको कहाँ मेंटेन करके किस सिक्योरिटी से रखें ताकि वो चोरी ना हो। अगर ये चोरी भी हो जाता है तब भी आपके नाम पे है, तो ये एक अच्छा इन्वेस्टमेंट का सोर्स होता है और इसकी 8 years मैच्योरिटी पीरियड होता है। और गुरुग्राम से हमारे श्रोता भवानी सिंह लाइन पे हैं। भवानी जी नमस्कार, बताइए क्या पूछना चाहते हैं? नमस्कार सर, मैं ठाकुर भवानी सिंह गुड़गांव से। जी, सवाल पूछिए। I'm afraid we lost Bhavani Singh there. Just briefly, I hope he calls us back with his question to our expert, Dr. Yamini Agarwal. What is the motivation of short sellers who are trying to bring the market down? How do they profit from someone else's misfortune? Usually, short selling is a technique or a strategy whereby you are actually trading on the idea that tomorrow the stock or in future the stock prices will go down. So today you sell it at a higher price in the hope that you can buy it at a lower price tomorrow, and then you can deliver it to the person who you sold it earlier. So that is how it actually works. So it's primarily many short sellers usually gain on the misfortunes of people whose stocks suddenly fall because of any particular news in the market. Next caller is Ratnakar from Mumbai. Ratnakar, a warm welcome to you on the program. Please ask your question to our expert. गुड इवनिंग सर। मेरे 2 सवाल है। एक सवाल है कि जो अभी पेपर में आया था विंडफॉल टैक्स कम हो जाएगा, तो उसका मतलब क्या है वो है। और दूसरा सवाल है कि कुछ रिपोर्ट के अनुसार कुछ ग्रुप के शेयर बहुत गिरे थे, अभी वो फिर बढ़ रहे हैं, इसका मतलब क्या है? रिपोर्ट में कुछ सच्चाई है क्या नहीं? जी देखिए, विंडफॉल टैक्स यूजुअली होता है जब विंडफॉल का मतलब होता है कि आपको एकदम से कहीं से पैसा मिल जाना, कोई चीज ऐसा होना जिसकी वजह से आपको एकदम से जो है फायदा पहुंचे, और उसके ऊपर जो टैक्स लगता है उसे विंडफॉल टैक्स कहते हैं। आपका जो सवाल है ग्रुप शेयर्स को लेकर के, वो जो ग्रुप शेयर्स का आप बात कर रहे हैं उसके अंदर देखा गया था कि एक रिपोर्ट आई थी, और जिस रिपोर्ट के बेसिस पे जो मार्केट का कॉन्फिडेंस था वो डाउन हुआ और काफी लोगों ने अपने शेयर्स बेच दिए, जिसकी वजह से मार्केट पे भी और उस ग्रुप की कंपनीज पे भी इफेक्ट रहा है। लेकिन धीरे धीरे जैसे उन्होंने अपना रिस्पॉन्स फाइल किया और लोगों को और बहुत सारी चीजें पता चली, तो उसके साथ साथ को कॉन्फिडेंस वापस आया है, और बहुत सारी चीजें ऐसी हुई हैं जैसे कॉग्निसेंस लिया है कुछ रेगुलेटरी बॉडीज ने, बाकी कुछ जो रेटिंग एजेंसीज हैं उन्होंने कॉन्फिडेंस दिखाया है उस स्टॉक में। तो इन सभी को लेकर के जब इन्वेस्टर्स ने ओवरऑल रिपोर्ट को पढ़ते हुए और साथ ही जो डेवलपमेंट्स हुई हैं उनको देखते हुए कॉन्फिडेंस वापस आया उस ग्रुप के अंदर, और हम उसी लिए देख रहे हैं कि शेयर की प्राइसेस बढ़ी हैं। और कोलकाता से हमारे श्रोता अतनु शाह जी लाइन पे मौजूद हैं। अतनु जी नमस्कार, बताइए क्या पूछना चाहते हैं? Good evening, sir. Good evening, madam. My question is, please explain about Bharatmala project and aquaculture in India. Thank you.
Bharatmala and Sagarmala projects are infrastructure projects of developing ports, airports, other infrastructure, activities like corridors, freight corridors and other things in India. And they have been one of the ambitious projects of the government in developing most of the infrastructural requirements in India. So whether you see these bridges or you see the highways or you see the port developments or the airport developments, they are all a part of the infrastructure development. As far as the particular marine, there is also another ambitious project of the government where it wants to look at the blue ocean economy and develop the marine sector in the way of benefiting the coastal region and the people who live there. So there are certain ambitious projects even in the blue ocean economy that have been taken. One of them is the one that you discussed. Just coming back to the stock market, and clearly the economic position is very important as well when an investor takes a decision on whether to buy or sell in the economy. We saw for the week the Sensex in fact rose by 320 points, but we saw a lot of selling pressure on Friday. So our listeners would also like to know how the market would fare coming Monday. Well, I think the markets would remain more or less stable and there wouldn't be much volatility over there, as the VIX even we've observed is not very high, it's at the lower end. Also, what can be more interesting is to observe stock-specific actions over there. So I do feel that if somebody wants to make good gains, it would be right to actually bet on the stock rather than on the entire market. Next caller is J.S. Saluja from Delhi. Warm welcome to you in the program. Please ask your question to our expert, sir. Good evening to Yamini ma'am and the entire market team. Good evening. While stocks of chemical sector, especially the amine companies and the PSU bank companies, that is the public sector bank, they are falling, and what is the future outlook of it? Thank you. Well, as far as the chemical sector is concerned, it is more or less stable in terms of its approach, though certain stock-specific action can be observed in the chemical sector. Where you go in for the PSU sector, most of the PSU sector has been observing good numbers in terms of their profits, and there has been good indicators in terms of their improvement in the NPA position also. So there is a possibility, that is also a hope in the next week, that the banking sector, especially the PSU sectors and the PSEs, the public sector enterprises, would do well together with the IT and the pharma sector. Well, let's have a look at the U.S. market and how it performed. The S&P 500 and the Nasdaq fell yesterday. Oil prices also settled lower after U.S. economic data prompted bets that the Fed Reserve would get more aggressive with interest rate hikes to check inflation. The Dow Jones Industrial Average added 0.4%, while the S&P 500 fell 0.3%, and the Nasdaq Composite Index lost 0.6%. Yamini, how serious is the inflation problem still in the U.S. and, for that matter, in Europe as well? Briefly. It is quite a serious problem because they are still facing a 40-year high inflation, and they have been still aggressive on their rates hikes that are there. And it appears that our market tends to follow the trends of the U.S. stock indices as well. Yes, we also have to ensure that the inflation is lower, as well as keep our interest rates differentials in line with the international rates, so that the FIIs and the other investors continue to invest in India. So it's not just securities, we're also looking at precious metals like gold and silver. Yes, we are. और चलते हैं कार्यक्रम की समाप्ति की ओर। डॉक्टर यामिनी जी इस कार्यक्रम में शामिल होने और श्रोताओं को बहुमूल्य जानकारी देने के लिए आपका धन्यवाद। जी धन्यवाद। And before we close, a reminder of the headlines. The key domestic stock indices logged gains of 0.5% in the week ended yesterday. Sensex finishes above the 60,000 mark. Nifty settles near 18,000 level. And the U.S. share markets trade mixed amid concerns about aggressive Fed Reserve action as well. घरेलू शेयर बाजारों में कल समाप्त हुए सप्ताह में 0.5% की बढ़त दर्ज की गई। सेंसेक्स 60,000 के स्तर के ऊपर चला गया, जबकि निफ्टी 18,000 के आसपास बना रहा। और अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरें बढ़ाने की आशंका के बीच शेयर बाजारों ने मिला जुला प्रदर्शन किया। And that's it in this edition of Market Mantra for now. Goodbye. Market Mantra.